SA70 का नाम फॉर्मिंग एन ओपिनियन इन रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? SA701 SA700 डील्स विद ऑडिटर्स टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन ऑफ कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम audit evidence and express clearly the opinion through the written report. Forming an opinion on financial statement. Auditors shall form an opinion whether the financial statements are prepared in all material respect in accordance with applicable financial reporting framework. बोलता है, in order to form an opinion, auditor shall obtain reasonable assurance that the financial statement as a whole are free from material misstatement whether due to fraud and error. अब जैसे बोलता है, इन अदर वर्ड ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अनमोडिफाइड ओपिनियन व्हेन ही कंक्लूड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मेटल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। बोलता है बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है? तो बेसिक एलिमेंट में टाइटल, एड्रेसी, ऑडिटर्स ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, गोइंग कंसर्न, की ऑडिट मैटर, अदर इन्फॉर्मेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एफएस। बोलता है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लोकेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डेट, प्लेस ऑफ सिग्नेचर ऑफ द ऑडिटर, प्लेस ऑफ सिग्नेचर एंड डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। तुम्हारा सबसे पहले टाइटल, एड्रेसी, ताप जी के रालोस, TAAB ताप जी के ओ रालोस। बोलता है टी से टाइटल, ए से एड्रेसी, ओ से ए से ऑडिटर, बी से ओपिनियन, जी से गोइंग कंसर्न, के से के ऑडिट मैटर, ओ से अदर इन्फॉर्मेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एफएस, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट ऑफ एफएस, लोकेशन ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट ऑफ एफएस, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिग्नेचर ऑफ द ऑडिटर, प्लेस ऑफ सिग्नेचर एंड डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है। ऑडिटर बोलता टाइटल में क्या होता है? तो ऑडिटर से टाइटल क्लियरली इंडिकेट दैट रिपोर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स। बोलता है द ऑडिटर्स ओपिनियन, द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट शैल इंक्लूड ऑडिटर्स ओपिनियन, identify the entity whose financial statement audited, state that financial statement have been audited, identify the title of which statement comprising of financial statement refers to, not including the summary of significant accounting policy, specify the date or period covered by financial statement। बोलता है while expressing the unmodified opinion on the statement in accordance with the fair presentation framework, auditor's opinion shall, unless otherwise law and regulations, use one of the following phrases with regard as equivalent। बोलता है in our opinion accompanying financial statement present fairly in all material respect in accordance with applicable financial reporting framework। In our opinion, accompanying financial statement present fairly in all material respect in accordance with applicable financial reporting framework। बोलता है in our opinion, accompanying financial statement give true and fair view in accordance with applicable financial reporting framework। ये जब नॉर्मल केस में होता है, मतलब जो when express unmodified opinion on financial statement prepared in accordance with fair presentation framework। और compliance framework में ऑडिटर क्या देता है? Auditor's opinion shall be accompanying financial statement prepared in all material respect, accompanying financial statement prepared in all material respect। मतलब इसमें डेविएट नहीं हो सकता। यहाँ पर मैं ऑडिटर्स जो है तो डेविएट हो सकता है, यहाँ डेविएट नहीं होता, कैन नॉट डेविएट। बोलता है इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या होता है? बोलता है स्टेट दैट ऑडिट वाज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट, refers to sections of the auditor's report that describe the auditor's responsibility under the SA। उसके बाद conclude that statement that auditor is independent of the entity in accordance with relevant ethical requirement relating to audit। बोलता है state whether the auditors believe that the auditor has obtained sufficient and appropriate to provide the basis for auditor's opinion। Use of going concern basis of accounting inappropriate have been financial statement are prepared using the going concern basis of accounting, but in the auditor judgment
Going concern basis of accounting is inappropriate. Going concern basis of accounting inappropriate. Auditors shall express adverse opinion. बोलता है यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अप्रोप्रिएट है और बट मेटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट है. तो दो केस होता है. Auditor disclose adequate disclosure of material uncertainty in the financial statement. If adequate disclosure of material uncertainty is made in the financial statement, auditor shall express unmodified opinion, and auditor's report shall include separate sections under the heading material uncertainty relating to going concern, where he draw the attention to the note of the financial statement that disclose the matter and state that event or condition that may indicate that material uncertainty relating to going concern. State that event or conditions indicate that material uncertainty exists that may cast significant doubt on the entity ability to continue as going concern, and auditor's opinion is not modified in respect of the matter. उसके बाद फिर auditor adequate disclosure नहीं दिया है. If adequate disclosure of material uncertainty is not made in the financial statement, then auditor shall express qualified or adverse opinion as appropriate in the circumstance. If in the basis for adverse or disclaimer of opinions and in the basis for adverse or disclaimer of opinion sections of auditor's report state that material uncertainty exists that may cast significant doubt on the entity ability to continue as going concern, that material uncertainty that financial statement do not adequately disclose the matter, that the financial statement do not adequately disclose the matter. Management unwillingness to make unwillingness to make या extend the assessment. If management is unwillingness to make या extend the assessment when requested to so by the auditor shall consider the implication on the auditor's report. Auditor shall consider करेगा auditor's report में key audit matter क्या होता है. तो key audit matter और those matter that in the auditor professional judgment were most significant in audit of financial statement of current period and matters are considered and those matters are discussed with the TCWG. आगे भी हम लोग देखने जा रहे हैं. देखो यहाँ पे लिखा की ऑडिट मैटर्स आर दोज मैटर्स दैट इन द ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट वर मोस्ट सिग्निफिकेंट इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड एंड की ऑडिट मैटर आर सेलेक्टेड. हाँ, की ऑडिट मैटर सेलेक्टेड फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड विद TCWG. ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. तो मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी में दो चीज़ को लिख के चलना होगा. प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड इंटरनल कंट्रोल एज द मैनेजमेंट डिटरमाइन दैट इट इज नेसेसरी टू इनेबल द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर फ्री फ्रॉम मेटल मिस स्टेटमेंट. बोलता है एसेसिंग द एंटिटी एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न basis of accounting is appropriate as well as disclosing. बोलता है and the explanation that management बोलता है explanation of management responsibility for the assessment shall include a description when the use of going concern basis of accounting is appropriate. उसके बाद use of going concern basis of accounting में appropriate ये डोल देगा. auditor's responsibility रिलेटिंग टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इसमें 3-4 बात है जो बेसिक चीज़ है, तो तुम बस रीड करके चलो. obtain reasonable assurance that the financial statement as a whole are free from material misstatement. issue the audit report that include auditor's opinion. उसके बाद बोलता है state that reasonable assurance is the high level of assurance but does not guarantee that audit was conducted in accordance with as will always detect a material misstatement. Statement that material misstatement can arise from fraud or error and describe that they are considered to be material individually or in aggregate. They could reasonably be expected to influence the economic decisions of the user taken on the basis of financial statement. Provide adequate description of the materiality in accordance with AFRF. उसका ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फर्दर डिवाइड किया गया है टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट एंड मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट एज पर ऐसे उसके बाद बोलता है टू डिस्क्राइब ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ग्रुप ऑडिट इंगेजमेंट in case of group audit engagement as per SS 600 to describe auditors to describe that auditor by stating that auditor is responsible for identify necessary risk of material misstatement to obtain understanding of internal control relevant to audit and to design the audit procedure to evaluate the appropriateness of to evaluate the use of appropriateness of accounting policy, reasonableness of accounting estimates and related disclosure made by the management. उसके बाद भी बोलता है to conclude on the appropriateness of management to use of going concern basis of accounting to evaluate the overall presentation and content of financial statement to overall
उसके बाद ऑडिटर का तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, ऑडिटर कंक्लूड दैट TCWG बोलता है और स्टेट दैट ऑडिटर हैल कम्युनिकेट विद TCWG प्लान स्कोप ऑफ टाइमिंग सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, उसके बाद सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज इन सिग्निफिकेंट डिफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल दैट ऑडिटर हैज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिटर। और तीसरा बोलता है स्टेट दैट ऑडिटर्स प्रोवाइड TCWG विद द स्टेटमेंट दैट कंप्लाइड विद ऑल relevant रिक्वायरमेंट, कम्युनिकेट ऑल द relationship बोलता अदर मैटर दैट रीजनेबली बी थाउट टू बियर ऑन द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस वेयर एप्लीकेबल टू सेफगार्ड। बोलता है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो की ऑडिट मैटर को डिस्क्लोज करेगा। और बोलता है इन अकॉर्डेंस विद 70 ऑडिटर डिस्क्राइब दिस मैटर दैट इन द ऑडिटर प्रोफेशनल। बोलता है एज पर SS 701 ऑडिटर्स डिस्क्राइब दैट दिस मैटर्स इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन प्रिक्लूड्स public disclosure about the matter when in the extreme rare circumstances when auditor determines that it is that when auditor determines that a matter should not be communicated in the auditor's report। बोलता है unless required बोलता है unless law and regulation preclude the public disclosure about the matter, when in the extreme rare circumstances auditor determines that it is auditor determined that a matter should not be communicated in the auditor's report because of adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefit of such communication। लोकेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्रिप्शन दे सकता है। बोलता है विद इन द बॉडी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट दे सकता है, विद इन द अपेंडिक्स टू द ऑडिट रिपोर्ट दे सकता है। इन केस ऑफ ऑडिट बोलता है इन केस ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट shall include reference to the location of appendix, उसके बाद by specific reference within the body to by specific reference within the auditor's report to the location of such descriptions on a website of appropriate authority। ये वाला ऑडिटिंग बोलता है ऑडिटर्स रिपोर्ट फॉर ऑडिट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद बोथ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इशूड बाय ICAI और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इशूड बाय international standards on auditing international standards on auditing or other jurisdictions। बोलता auditor may be required to conduct audit in accordance with ऐसे in addition to standards on auditing issued by ICAI, the international standards on auditing or auditing standard of other jurisdictions। if auditor बोलता है if it is the case that auditors report may refer to standards on auditing in addition to international standards on auditing or auditing standards of other jurisdictions, but auditors shall do so only if there is no conflict between the requirement of IAS or such auditing standards of other jurisdictions or those in SA that would lead the auditor to form a different auditor, not to include emphasis of matter paragraph and other matter paragraph। बोलता है there is no conflict between the requirement of IAS international standards on auditing or such auditing standards of other jurisdictions। बोलता है ऑडिटर टू फॉर्म ए डिफरेंट ऑडिटर नॉट टू इंक्लूड emphasis of math और पैरा बोलता है ऑडिटर रिपोर्ट इंक्लूड ईच ऑफ द मिनिमम एलिमेंट। बोलता है ऑडिटर रिपोर्ट इंक्लूड at a minimum each of the elements set out in the auditor's report prescribed by law and regulation when auditors use the wording prescribed by law and regulation when the auditors use the layout or wording prescribed by auditing standard। When auditor's report refers to both IAS international standards on auditing or auditing standards of specific jurisdictions, बोलता है auditing standards issued by ICAI, auditor report shall clearly identify the same by indicating the jurisdictions of origin and other auditing standards। बोलता है if supplementary information that is not required by the applicable financial reporting presented with the audited financial statement, auditor shall evaluate whether the auditor professional judgment the supplementary information nevertheless of integral part of the financial statement due to its nature or presented how it is presented। बोलता है when it is the integral part of FS, बोलता है supplementary information shall be covered by the auditor's opinion। when it is not the integral part of FS audited FS, then auditor shall evaluate whether the supplementary information is presented in such a way that that sufficiently or clearly differentiates from audited financial statement। if it is not the case, then auditor shall make the request to then auditor shall ask the management to change the presentation of unaudited supplementary information। बोलता है then auditor shall ask the management to change how the unaudited supplementary information is presented। if management refuses to do so, then auditor shall identify unaudited supplementary information and explain the auditor's report such supplementary information has not been audited।